अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और वेलकम बैक टू माय चैनल. If you're new, my name is Ramiza and I make videos about skincare, makeup tutorials, sometime occasional vlogs, cooking, baking and much more. So make sure you subscribe to my channel before we continue this video. So this video is about my skincare routine. I'm gonna just remove everything right now. This is my face. काफ़ी रात हो गई. I'm too tired honestly, so I want to remove this makeup so I could go to bed. कोशिश करती हूँ जो मेरे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो उनका बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मैं उनको एटलीस्ट 4 to 6 weeks यूज़ करती हूँ एंड मैक्सिमम 6 to 8 and 8 to 10 weeks. So that's how I do use my products to see their results. So I'm just gonna continue the video and make sure you already subscribe to my channel and also follow me on Instagram. So first thing I'm gonna use here I have two products right here because when first I heavy makeup kiya was I try using like two products. One, this is cleansing oil balm from Sephora, and the other one is this Tarte um, micellar magic water. So okay, so ये दो चीज़ें हैं. सबसे पहले मैं ये यूज़ करूँगी. So I'm gonna be using it with my cotton pads. Wow, that's a lot of product. Let me just put this on first. Okay. अच्छा जी, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना. मेक श्योर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो रबिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, so try not doing that. After this I'm going to use this Sephora cleansing balm. It came with this little spatula. मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि I'm sleepy. I'm actually sleepy. लेकिन मैंने कहा कि आज जब मैं इतना ढेर मेकअप उतार रही हूँ ना तो let's just record this to not to make a video पहले तैयार हो बाद में उतारो makeup. So I'm just trying. Right, I'm gonna melt this in my hands. I'm gonna apply this on my face. This smells so good. It has like a lot of oils and stuff, like very good stuff in here. It smells good. It feels good actually. It's very creamy and sticky. अच्छा मैं लगाने के बाद ना आंखें थोड़ी सी साफ करूँगी. Alright जी. अच्छा जी, करने के बाद मैं अपना मुंह साफ करूँगी. I mean वॉश करूँगी. और फेस वॉश करने के लिए जो है मेरे पास ये जूस ब्यूटी का जो है पेल सेंसिटिव क्या है gel cleanser. Yeah, gel cleanser. This is how it looks. I'm gonna wash my face with this cleanser. And I'll be using my PMD cleanser with this. This is my cleanser. And I'll be using this. So I will leave it on for like 10 minutes on my face and then I'll wash it off. Okay, so मैंने ठीक से अपना मुंह धो लिया है बिल्कुल, मतलब पानी सिर्फ मैंने यूज़ किया है, उसके अलावा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया. And look at my skin.
ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे जो है कोई भी वो जो होते हैं ना पैचीनेस और ये वो उस तरह से नहीं है लाइक ओके नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस ब्राइटनिंग एसेंस बाय जूस ब्यूटी आप हाथ से यूज़ करना है हाथ से लगा लें कॉटन पैड से मैं हाथ से लगा रही हूँ जस्ट फ्यू ड्रॉप्स इससे कि मेरी जो डिस्कलरेशन है स्किन की वो ख़त्म हो जाती है this glow recipe toner. This toner is so good. उसके बाद में ये ग्लो रेसिपी का जो है it's niacinamide dew drops. Oh my god, this is so good. Nothing is sponsored. These are my own, you know, मुझे खुद से जो है मैं डिस्कवर की मेरी स्किन को क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं. ठीक हो गया जी. अच्छा ये है मेरी इस वक्त की आज अभी तक की जो है विंटर रूटीन. मैंने अभी तक कुछ चेंज नहीं किया फ्रॉम लास्ट 2 months. December, January, and this is mid of February, so almost 2.5 months I'm using these same products, same routine, nothing changed. हाँ बस ये जो बाम है ये मैं तब यूज़ करती हूँ क्लेंजिंग बाम जब मैंने काफ़ी सारा मेकअप किया होता है. तो इफ़ आई एम नॉट वेयरिंग एनी एक्स्ट्रा मेकअप लाइक रेगुलर रूटीन अदर देन रेगुलर रूटीन तब मैं सिर्फ मेरी ये 5 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 8 to 10 weeks basically. Also, last but not least, I'm using this milk makeup lip balm. Okay, this lip balm is so good. I've been using it for like almost the same time, and this is my balm. I use this every single night. I love it, and I cannot live without lip balms. I mean, I can live without water, but not lip balm. So yeah, that's all for today. I hope you like the video. I hope you like my winter skincare routine. If you have any question, comment me down below and follow me on Instagram and subscribe to my channel. Alright, so thank you so much for watching. I'll see you guys soon. Bye.